Let us see the question answer of chapter 6, A Day with Ahmad. Answer the following questions. Question number 1. How many people are there in Ahmad's family? There are 5 members in Ahmad's family. Which class in Ahmad is? Ahmad is in class 4. When does Ahmad get up in the morning? Ahmad gets up at 6 o'clock in the morning. How far long does Ahmad attend school? Ahmad attends school for 8 hours and 30 minutes. Why do we have to take a cold shower after exercising? We have to take a cold shower after exercising because if we do not have to take a bath, then the sweats may cause infection on our body. Understand? What does Ahmad do after taking a cold shower? So, गाधे सारा पर कौन करे? After taking a cold shower, Ahmad eats breakfast and goes to school. How does Ahmad take care? How does Ahmad go to school? Ahmad goes to school by his bicycle. Then question number 8 is, how does Ahmad take care of his little sister? Ahmad picks up Lali. Who is Lali? Lali is his little sister. Ahmad picks up Lali from her school every day. Though he takes care of his little sister Lali. Okay? Then why does he enjoy going back home with Lali? He enjoys going back home with Lali because they share all their stories with each other and laugh hard. What do Ahmad and Lali do after reaching home? After reaching home, Ahmad and Lali play with their friends. Okay? Then comes to question number 2. Question number, change the sentence using have to or has to. देखो, have to, has to means have to କରିବାକୁ ହେବ. Have to or has to. ତା अर्थ तुम निश्चित भाव में करिबो, तुम करिବାକୁ बाध्य, bound. You have to do it. You are bound to do it. तुमको होमवर्क दिया जायछि, मां कहबो तते होमवर्क टा ना करिବାକୁ हबो, तू बाध्य तमे करिया. सेटा से कहूची जे आमे you must play, ए must अर्थ तुम निश्चित भाव में करिबो, तुम निश्चित खेलिबो. You must play, तुम निश्चित भाव में खेलिबो. ए must बदल रे आमे either have to or has to बसेबा. कोठा बसेबा देखिबा. have to बा has to बसबो. have और has यूज नामे जानिजे कोठी have बसे ना जेते बेले सब्जेक्ट ता फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हेतिबो बा प्लुरल हेतिबो, सेकंड पर्सन सिंगुलर हो बा प्लुरल हो, आ कोन ना थर्ड पर्सन प्लुरल हेतिबो. एई जगह रे पांचटा जगह रे हम कोन बसो have बसो नोनी. ए जो have बसो जो जोटी सब्जेक्ट रो have बसे से हम have to बसे ना कहा बदल रे must बदल रे. यूटा देखो, यूटा की प्रकार सब्जेक्ट सेकंड पर्सन, it may be singular or may be plural. You जेहेतु रे सेकंड पर्सन कोन बसो have to ना has to, it takes have. So we can write it, you have to play. Understand? You have to play. You must play, the meaning of this sentence,
and the meaning of this sentence is same. तुमको खेलिबा को हेबो, तुमको निश्चित भाबरे खेलिबा को हेबो, एटा भी तुमको निश्चित भाबरे खेलिबा को हेबो. You must play or you have to play. Understand? Then he must stop now. बर्तमान हम must बदले बसैबा. He टा मते कुह को की सब्जेक्ट. He टा जे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर. एटी जेहेतु थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इट टेक्स हैज. ताले कोन होबाटी he must stop now. I can write it he has to stop now. Understand? Must बदले हम कोन बसैली has to. आउ must बसिला की ना. You पाखरे have to बसला परे आउ must बसला की ना. must रो अर्थ जहा have to रो अर्थ सेया. आमे must बदल रे have to बसैली बसौछथि. ए जे 2 नंबर रो आउ जेतरा देछि तमे निजे करियो. ओके, सी तो क्वेश्चन नंबर 3. Change the sentence using will, shall, will, oblique shall, oblique has to, oblique have to. कोठी will लागिबो, कोठी shall लागिबो. आगे बुझो आमे will और shall रो कोठी व्यवहार करू भविष्यत काल. वर्षा हेबो, आसंता काली मु विद्यालय जीवी. ए जो भविष्यत काल पाखरे आमे कोन करंती will बा shall व्यवहार करू. पुणी कोठी will व्यवहार हुए, कोठी shall व्यवहार हुए. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लुरल पाखरे आमे कोन बसौ shall. That means I and we takes shall. But third person singular and plural पाखरे आमे कोन बसौ will. They will, he will, she will. बुझ परलो will और shall कोड लागे जान परलो. आमे प्रीवियस क्वेश्चन रे आलोचना करथले has to और have to कोड व्यवहार हो जानछो. आमे दीटा को लगे कि व्यवहार करबा को चेंज करबा. एई must टा will किबा shall किबा has to बा have to बदल रे बसलो किबा must बदल रे. तमे मते एना प्रश्न करि पारो जे काहे कि आगो क्वेश्चन रा केवल have to और has to must बदल रे बसुथला. बर्तमान will सेही must बदल रे has to और have to बसो will किबा shall काहे कि बसिबो. मु कहिची will और shall टा कोठी बसिबो ना फ्यूचर टेंस. दैट मींस भविष्यत काल. भविष्यत काल चिन्ह कोन टुमोरो. आसंता काली सैटरडे. बर्तमान सैटरडे मन करा हेई नाही सैटरडे कमिंग सैटरडे. ए सब क्षेत्र थिबो जेतबेले आमे जानिबा कामटा घटी नाही घटिबो सेतबेले आमे कोन बसेबा will की shall बसेबा. अब must बदल रे has to और have to बसेबा. Let us see we must buy another ball tomorrow. Understand? आमे डी कोन लिखबा we must बदल रे कोन बसेबा tomorrow थिबा तो we पाखरे कोन बसिबो we shall. must we जेतु तो छी have to ना has to have to we shall have to buy another ball tomorrow. Another ball tomorrow. Okay? बुझ पालो ना एटा we shall जेहेतु tomorrow अछि हमें shall बसैले will बसैले बिना कि एटा होछि फर्स्ट पर्सन प्लुरल नंबर. जो जेहेतु रे फर्स्ट पर्सन प्लुरल नंबर सब्जेक्ट सेटा इट टेक्स shall for future tense. Then must बदल रे हम कोन बसैले have to. have काहे कि देले फर्स्ट पर्सन प्लुरल नंबर बोली. अंडरस्टैंड? क्वेश्चन नंबर 2. She must help her mother Saturday. She third person singular. She will. must बदल कोन बसिला has to. help her mother Saturday. बुझलो नाही. सी होची थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सेतपे सी will नेला. कोन सी होची थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हेतिबारु has नेला. एटा होची फ्यूचर टेंस हेतिबारु हमें will भी व्यवहार करे. ओके
Let us come to the next question number 4. I cooked a meal my mother made me. This is the two different sentences. I cooked a meal my mother made me. When we join these sentences like this, my mother made me cooked a meal. Cooked a meal. When we join this, I cooked a meal my mother made me. My mother made me cooked a meal. That means my mother bound me to cook a meal. मो मां मते गोटे खाद्य रांधिया पे बाध्य कर मते इच्छा नहीं किंतु मते जोर जबरदस्ती कहले तमे एटा रोसई कर ए सेंटेंस रा दीरा अर्थ एया एटा को कोन करबा आमे ए जो माय मदर मेड मी को ओमिट करी आई कुक्ड ए मील इन द सेंस ऑफ माय मदर मेड मी गोटे वाक्य लिखि परिबा कोन I had to cook a meal. I had to cook a meal. Do you understand? Try to understand. Cooked. Cooked. Did plus cook. It is the past form. It is the V form of cook. So we use had. Had is the V2 form of had. Okay? Then my mother made me. मो मां मते बाध्य कले रोसई करिबाकू मोते रोसई करिबाकू हेबो एका कथा मते रोसई करिबाकू हबो आई हैव टू कुक ए मील जेहेतु एठी कुक्ड अछि V2 फॉर्म अछि पास्ट टेंस अछि एमे हमकु हैड व्यवहार कराला सेतबे प्रेजेंट टेंस रे थिला बोली हमकु हैव व्यवहार करथले जेहेतु एटा पास्ट टेंस रे अछि कुक्ड देन वी यूज हैड made is the V2 form of must. We must do it. We must do it अथवा I have to do it. I made him do it अथवा I had to do it. Understand? Okay. Then you complete the number 4 A B C D E. Okay. And question number 5. 5 is gonna practice this conversation around the class. Try to make up some more with the help of words given below. Which what did you have to do yesterday? देखो, this is what had to do. What had to do yesterday? गतकाली तुमको कौन करिबाकू थिला? What did you have? What did you have to do yesterday? What did plus have. Did plus have. आमे जानिछु V1 फॉर्म रे did जोग हेले कोन पाव आमे V2 त did जेतेबेले V1 रे have रे लागिला कोन हो सेटा had. V2 form of have हैला did plus have is equal to had. V1 हैला have did तो सहित जोग हैला V2 form हैला had. तनो what did you have एटा को हमें कोन करबा did have बदल रे हमें कोन बसै परिबा had. तले हमको हम कोन कर लिखि परिबा को what had you do yesterday. Understand? What did you have to do yesterday? Did plus have को आमे जॉइन करी कोन लिखि परिबा had लिख देले.
what had you to do yesterday बुझला नहीं से कथा से कहूची जे तमे what did you have to do yesterday ना I had to do yesterday कौन ना I had to do I had to help my mother ये जो वर्ड रा देखिए help my mother help my father help my uncle yesterday I had to help my mother yesterday I had to help my father yesterday I had to help my uncle yesterday I had to do some homework yesterday I had to do some cleaning yesterday I had to do some washing yesterday I had to go to school yesterday I had to go to Mumbai yesterday I had to go to Calcutta yesterday understand এটা তুমি 5 নম্বরটা কমপ্লিট করব then come to question number 6 দেখি read aloud বড় পাটিরে পড়িব reading makes us perfect man writing makes us exact man তুমি আমি perfectly audible reading করি পাইবা তাহলে আমি ଗୋଟେ perfect man হেই পাইবা তুমি हमको ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ଶିଖିବା ଦରକାର ଦେଖ देखी spots means चिन्ह spot SPOTS spot SPOTS spots माने चिन्ह एटा ठीक SPOTS spots माने चिन्ह देखो लेटर गुडा जहाँ से अच्छी तो टिके जस्ट टिके चेंज है हम प्रोनाउंसिएशन पूरा चेंज हो गया SPORTS यार हो गया कौन आर खाली बसी गला SPOTS स्पोर्ट्स माने खेल तो नहीं जो स्पोर्ट्स को पॉट कर हम स्पोर्ट बोली कोई उच्चारण कर हम भूले जो माने सेट में से कहूची इट इज प्रोनाउंस्ड क्लियरली pronounced loudly okay sports shoot shoot देखो shoot SHOT shot SHORT shot R बस गला SHORT shot cut COT cut cut CAUGST cut आर गोटे कट अछि CUT cut okay then collar 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 COLLOR collar जो बेको गला लंबा पूरा बंद जाए CALLER collar CALLER collar कॉल कलर जे कॉल करे एटाके कक 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 COCK कक आउटे कर खेलन जेटा CORK तापर असले देखो पट 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 टट 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 स्टोरी स्टारी स्टोरी अंडरस्टैंड तमे एटाकू कौन करिवो ना प्रोनाउंस क्लियरली करियो ट्राई करिवो एवं यार डिफरेंट मीनिंग को मने रखिबो लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 7 इज योर लास्ट क्वेश्चन देखि मेक आंसर्स यूजिंग एगो मींस पूर्वरु केते वर्ष पूर्वरु आमे काम करूथिले केते दिन आगरु आमे एक खाद्यटा खाइथिले आ पूर्वरु माने आगो से क्वेश्चन करजी when was your last birthday तुमर जो जन्मदिन पालित हुए गत जन्मदिनटा केते दिन हेलानी पालित होइता सपोज योर बर्थडे इज May 5 मे मास 5 तारिख पालित होइची वर्तमान कते मास जुलाई मास when was your birthday last birthday तमरा आंसर कोन हबो my last birthday was केते मास पूर्व जो मे अछि
जून जुलाई तेणु मे मास मझे गला 2 मास पूर्व my last birthday was 2 months ago बुझ परछ ना नहीं 2 मास पूर्व हमें पालित करथिलु ए हम जन्मदिन गत जन्मदिन हम 2 मास पूर्व पड़िला आगुरु बा पूर्व आ गोटे देख when did you leave home तुमे बर्तमान स्कूल धर आसुच केते समय हैला तुमे स्कूल छाड़ीच सपोज तुमे 10टा बेले स्कूल ले पहुंचिलो 9:30 रे घर छाड़ीथिलो देन कोन कहिलो I reached the school I left this home half an hour ago understand एमती तुमे कंप्लीट करिवो सब क्वेश्चन नंबर 7 जाय ओके